शाबाश मिलेगा बॉल नो बॉल अंपायर नो बॉल अंपायर कोई बात नहीं आएगा लड़का आएगा कबड्डी चला बॉलिंग करा निकल भी है ना फिर भी नो यार ये नो बॉल यार शाबाश मिलेगा शाबाश
Hello. 100 for 4 in 11.5 overs. Zohaib continuing. Shakil playing a nice drive towards the extra coverage, and there's protection there. Single taken. Haba Sheikh has already walked back to the pavilion. Ismail Hassan Siddiqui taking the wicket. Musa Raza taking the catch. Very crucial partnership for ADCL Reds. Naveed Khan, the most crucial of the batsmen. Slightly hot day today, however still it's windy. Loose delivery. Early days for Naveed Khan, still biding time. Normal circumstances he would have dispatched it for the boundary. Pitching it short, second consecutive time. There's a plan to this bowling setup. Naveed Khan wanted a single, however Shakil sending him back. Naveed still persisting and discussing with Shakil. Shiraz and Farhan, both at point and gully, are one of the slower fielders. So definitely Naveed was fencing his chances. And loose delivery, very lucky. And 2 taken. Not an easy chance for Usman Ghani. Would have been a blinder for sure. एक सौ तीन वो मैंने कोशिश की लेकिन 3 ही है 103 for 4 after 13 overs. सिर्फ है और ये कि एंड मैच एंड किस तरह होएगा कर सकते हैं अच्छा कर सकते हो चलो एंड इनिंग्स अच्छा है भी शहजादे मुस्तफ़ा नु दे ही जा रहे हैं नहीं इस्माइल है Ismail back into the attack. First over he conceded 8 runs but took the wicket of Haba Sheikh. He'll be continuing from the golf course end. And not convincingly played by Shakil. Call for 2, however they settled for 1. Plenty of overs left. The current run rate is exactly 8. The projected score is 200. Definitely ADCL Reds would like to have more than this. ADCL Yellows is packed with good batting lineup. Driven towards long on. Musa Raza runs in. Another single taken. Shakil and Naveed need to now build a partnership. Wait for the one bad odd ball. Dispatch it for the boundary. Take 8 to 10 runs per over. And keep rotating the strike. Meanwhile, Ismail would definitely target to break this partnership. Driven towards a long off. Again, there's protection there. Bakar Azam, the captain, throwing it back to Ismail. And another single taken. Sheikh Saab. बोलो बॉल मिलेगी शॉट मिलेगी शाबाश शाबाश बॉल मिलेगी शाबाश Call for catch. Bakar Azam still quite far away. So Ismail definitely troubling the batsman. Shakil pitching it up, and now Naveed. Good bowling by Ismail so far.
punch towards point and a single taken. Short delivery, and that's a very, very poor shot. Naveed Khan gives the lollipop to Sadiq. Rana Amir now walks in. Now this was a wicket which definitely yellows wanted, and a wicket which ADCL Reds did not want to lose. That's the second time consecutively Naveed Khan तो कोई बात नहीं, जाके कह रहा मेरा मूड नहीं था। अगर वो पहली बॉल पे रन आमिर आउट हुए तो देन So at the end of the 14th over, it's 107 for what, 5? 4. 107 for 4. Zain Butt made 14 runs from 10 deliveries, Humayun 27 from 19 deliveries, Nadeem 9 from 10 deliveries, Khabar Sheikh 11 from 14. It's a 5 over. It's 107. कौन तेज कर रहे हैं? शकील भाई। Rana Amir walks in. The pressure is on Shakil as of now. After Rana, the two recognized batsmen are Mahmood and Nuwan Hamid. Definitely, Reds would not want to run out of and immediately played towards extra cover, chipped up, and a 4 by Shakil. Zohaib. पहले गेंद चौका, एक्स्ट्रा कवर दे। अगर शकील एंड तक रह गया ना फिर तो 200 क्रॉस है। खुदा ने हाथ से शकील लगा के है ना, एटलीस्ट 20 ओवर तक शकील रहे ताकि थले आके नूमी या महमूद फिर भी गेम चला लेंगे। The current run rate has dropped down to 7.73, and that's a huge 6 by Shakil. Magnificent indeed. Played towards long on, slightly towards cow corner region. So a 4 and a 6 immediately dispatched off the bowling of Zohaib Ali. Haji? Now 10 runs are already off the first two deliveries, and this is where basically we have to see how Shakil will play towards point. There is protection there. Rana Amir sends him back. I think good call. Could have been risky. No need to take risky runs when you have already taken 10 off the first two deliveries. ADCL Reds cannot afford a sloppy wicket as of now. Punch towards long on and gone for 4. Class, pure class by Shakil Rana. So 14 runs coming off the 4 deliveries. 46. The current run rate now goes up to 8.34. This is what
One good over for the batting does to you immediately from 7.7. The run rate goes up to 8.34. Shakil Rana now facing fifth delivery from Zohaib Ali. Well left, maybe anticipating a wide, not given by the umpire. Not pleased. Last ball of the and that's gone. Another sloppy wicket given by ADCL Reds. That was exactly the moment wicket would not have been anticipated but gifted. Numan Rana walks in. Numan Hamid, sorry. दिन भी होंगे यानी कि ए शॉट उत्थे ताड़े नहीं ना होंगे फिल्म पहले नहीं पता नहीं कि थोड़ा एपिक होता है लास्ट बॉल से टैप करके सिंगल लेके अगला वो ले लेंगे ना सुना ओवर एट द एंड ऑफ द डे दिस इज देयर ओवर 10 ओवर देने हैं ना This is what cricket is all about. To be honest, it was a poor over from Zohaib. Even the last delivery should have been dispatched for a boundary, but this is cricket. The batsman gifted a wicket in the lap of Ismail, who took a very good catch. He has been all over the place. It's 121 after 15 overs. Current run rate is still 8.16. The projected score is 204. I feel that Reds have already lost too many wickets. Mahmood and Kamran and Samad Khan are the remaining batsmen. Numan Hamid out of these batsmen is the perhaps recognized hitter. Rana Amir is although a left-handed batsman, but we need to see how he will respond to this clashes pressure. Slightly loose delivery, however Rana dispatches towards his long off region. Waqar Sohail immediately pounced upon it and a single was taken. Now Numan Hamid. Plenty of overs left for Numan. Now this is where ADCL Yellows would want him to be aggressive and try to hit. They won't mind conceding a couple of boundaries and then getting Numan Hamid's wicket because it's a prized wicket. Very tricky session of couple of overs for ADCL Reds. This can well decide if they will cross the 200 milestone or not. That's a 6 for sure, a huge one. That was a poor delivery by Ismail. Too short and also a googly. And Numan Hamid is very, very strong in that area. This is hard luck. मेरा ख्याल से तो आखिरी बॉल है तो शायद टैप करके सिंगल लेके दूसरा हाँ जी शॉट मारी ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡਰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੋਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ऐसे लेकिन तुसी कोई अगर बड़े इंपॉर्टेंट है
चलो सर इसलिए खेल रहे हैं सगे गलत नहीं कोई भी शॉट खेल जी पूरी मिले वही खेल रेडी रहो 7 runs so far. कितनी गेंद रह गई? Last ball coming up. 7 runs so far from this over. From Reds' perspective, I would say it's a good over unless they lose another wicket on the last delivery. That's what the Yellows would definitely want. And 7 runs from this over. 128 for 6 in 16 overs. The last batch of overs now will commence from the parking end. Zohaib Ali comes in. Rana Amir now facing Zohaib. Current run rate 8.08. And very lucky to get away with it. Good move by the captain Abu Bakr Azam, but persisting with Zohaib. Zohaib is an off spinner and he spins a lot. And Rana Amir is a left-handed batsman, so definitely good contest. That's a wide delivery. Slightly loose delivery, played towards long on. Single taken by Amir. फाइनल में भी क्या छोड़ दे तो क्या फायदा हमारा नहीं 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 को चार दिन मार मार के पहला दिया भाई और तो क्या छोड़ा पीछे से वो तो बड़ा डिफिकल्ट कैच था यार हैं वो बहुत डिफिकल्ट कैच था वो तो लगता है बटेरा था अगर पकड़ा गया था टेस्टिंग नुमान हामिद हाँ वो इवन प्रोफेशनली भी आ जाते आ जाए ना that's a wide delivery. उस्मान अली को कहो ना dispatch for 6. That's the delivery which Numan Hamid was waiting for. That's his arc, that's his area. The previous deliveries were targeted towards the off side. This one was slightly middle-ish and was immediately dispatched for a huge boundary. दूसरी पार्किंग में वो जो उधर देखो भाई भाई उधर उधर देखा नजर है मैं के शेयर से अभी बुला ले एक लड़का गया होगा लगेगी लगेगी दरख्त के साथ से
17 over. A single taken by them. Loose delivery and a huge six that definitely deserved it, and a no ball. A no ball by the umpire. A loose delivery near chest height. Now that's a free hit, and single dot taken. A good redemption by Suhaib. कितने के अंदर रह गए? Over. बॉल किया ना भाई अंपायर ने 145, 145. 145 for 6 in 17 overs. A lot of fielders and cricketers do not understand that the main umpire also has a lot of authority. He has the authority to. Definitely. The reason is because the main umpire is consulting with the leg umpire. So leg umpire is only a sport role in such case normally, and he is helping the main umpire either this will be or no. So ultimate decision is in the hand of main umpire. Another perception which a lot of cricketers have is that, Faisal bhai, this is what I would like your opinion. Many players feel that more or less nearly in every above waist height scenario, the spinner should be exempted. But I think that's unfair actually. If the ball comes to your face, even if it is a slow pace, this is still deemed as dangerous at the end of the day. As per new ICC rules, if you are a spinner and the ball is, if you are a spinner, then in such case it will not be treated as a beamer. Yani, if they will go for the two balls, they will not tell them to stop the bowling, but still it will be a no ball. You are right, yeah. At the end of the day, the ICC clause states that if the ball is deemed dangerous for the batsman and it's a no ball, even if he's the spinner. So definitely it's umpire's discretion. It's 145. The current run rate now moves up to 8.61. Now Noman Hamid will face Amir, the speedster. Slightly leggish. Call for two, but a single will be taken. Now this will be an interesting contest between Rana Amir and Amir Khan. This lefty and righty combination does sometimes have an impact on the bowler's line. Played and a miss. Hey, भाई कैमरे में आता सर जो आप बातें करते हैं वो सारी आती हैं फिर पैसे ना भाई मार क्या कर रहे हैं मेरी पिक्चर आ गई
Interesting contest between Rana Amir. Coming slightly forward. He played and a miss again. अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर. Correctly, Numan Hamid coming and having a chat with Rana. I think the strategy here should be to take a couple of singles and doubles and wait for the one odd pad delivery and then dispatch that to the boundary. Surprisingly, the third man and fine leg are both inside the circle. That's definitely a no delivery, no ball. Ball, I think, slipping from his hand. Trying too much for the Yorker. Sometimes it does happen to the best of us. Straight towards the long on region and a single taken on this free hit. अगला 30 ओवर है कब? आज तो नहीं. And a single taken. Ball driven towards long on. Numan Hamid taking it easy. कैच करते नजर आई होगी. अब तो आप पानेबाज है, कैच के लिए कैसे पहुंचता है. अच्छा एक मिनट. जैन अंधेरा और लगाई भी है कोई ये काली. A very well ball. Then you are the captain here. इसकी ढूंढ पे लाता है थोड़ा सा You had 150? 150 for 6 after 18 overs. The current run rate is 8.41. So it seems the probability of ADCL Reds touching the milestone of 200 is likely. Huh? 50, 150. 150 या 150 पाइन 18 नहीं पहले गलत है किसने डाला होगा. अच्छा ठीक है. 6 यार मेरे मास्टर. मजेदार है ना. मुझे पता लगता है अपना ब्रांड अपनी ग्रेस है. बाहर आ रहे हैं गांडू तो सबसे अच्छा फिल्टर कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं. पेट निकाल के आए हैं पाकिस्तान से. तो सारी तस्वीरें जो शेयर कर रहा था फलां जगह फलां चाहे वैसे यार मैं दिल चाह रहा था जंप मार के तेरे पास आ जाऊँ. तो खाने पीने के खाते की तस्वीरें सारी बड़ा मज़ा आया. लो जी यहाँ पे विकेट लेने वाले हैं और कुत्ते वाले पड़ जाए. मैंने उसको बोला बहुत ज़्यादा लेने के लिए. ये फरान कवर देखे मुस्तफ़ा है तेरे पास, हमजा है और यहाँ पे नोमी जो है इसे खा जाए. तो कितना होगा 150? हाँ 151.
ठीक है 2 बॉल 6 आ गया Loose delivery and dispatch for 4. शाबाश साले कम ऑन बॉय असल में पता है और ह्यूमन नेचर है, 7 पोल भी नज़र आता है बंदे को, बंदे है मैं बाकी ना जाऊँ पोल में। में थोड़ा डबल माइंडेड का भी इशू हो जाता है। That's a 6 and now caught by Salik. 1-1 है। हाँ यार इंडोर क्रिकेट याद आ गया। इंडोर क्रिकेट आज तूने खेली ना ट्रॉफी चेक की? ट्रॉफी चेक की? चलो अल्लाह बात। That's a dot delivery. That's what he should be bowling more. Productive over so far for ADCL Reds. I think this over might force the captain to go for his pace options, Amir Hamza and Mustafa. That's another 4. So a good over by for ADCL Reds. तेज है तेज करेगा मैं कोई और ही दुआ कर रहा ऐप के पीछे खड़े मैं क्या अल्लाह छक्का पार गया था। 107 for 6 in 19 overs. That's exactly what the doctor ordered for 80 Reds. पानी में पानी भी मांग रहे वो। हाँ ठीक है 19 still 6 overs to go. 6 ओवर बॉल चेंज करेंगे हैं सीन पता लग देख लो वैसे क्या अरे इन्होंने बॉल बेहतर कौन सा थोड़ा जेड़ा नजर आ जाए बैट्समैन। हाँ एक दफा ना देख लो बेहतर बॉल कौन साइड की लग रही है स्लाइड की लग रही है लेकिन ऐप ना पास मिलेगी वो ये होगा पास को ऐप ना तेल के बॉल ऐसे देख लो चेंज करना मैं कहना प्ले हेलो slow delivery by Amir, played and a miss. पूरी पारी ले रही है तूने Amir charging in. Single taken towards the square leg region. I think the strategy from Yellows would be now to seize the spin bowling and persist towards pace. They still have Amir Hamza, they still have Mustafa. If they want, they can always get Usman Ghani. It's surprising because what feedback we are getting from the batsman is that there is spin on the pitch, but I believe too much short or too much fuller deliveries are being still dispatched for boundary. Amir now bowling to runner. Slow delivery driven towards long off.
Numan Hamid now facing Amir. Dispatched and smashed towards a long area and gone for 4. Slightly short pitched and immediately dispatched. Our bhai pakad le. 178 for 6 in 19.4 overs. Numan is playing very intelligently, playing ground shots, not playing carelessly so far. And that's again not a catch for sure. Single. गलत प्रेशर था ये हो गया बट सब कैच नहीं सी यार इट वाज नेवर अ कैच Rana Amir facing the last ball of the 20th over. Yes, very intelligent cricket by Rana Amir. He knows that a boundary has already come off this over. It's 180 for 6 in 20 overs. 180. The current run rate is 9. सर अजान हो रही है पानी ले जा ओए अपना पढ़ना जरा वॉशरूम तो नहीं ठीक है रीजनेबल है सही है लीडो नहीं मैं पूरा पीऊंगा सर पानी बता रहा हूँ इसका 5वां ओवर है पहले 4 रहा था उसमें से 5 बॉलों में बीट हो गए 5 बॉलों पे महमूद सिंगल लेके 7 वाले को दे दो सर और मसला बहुत 225-30 हो रहा है इतना बैट बॉल का जिंदगी में शायद हिस्ट्री में पहली बार इतनी बैट बॉल पे आउट हुआ योर जॉब जस्ट टेक अ सेट एंड गिव इट टू द अदर दोनों बैट्समैन में रहना वो टेक अ सिंगल गिव इट टू हिम लेट हिम डू द हिट गॉड फॉरबिड वो आउट हो जाते देन कितने पिला ली वो जल्दी बटन नहीं पहनी बात नहीं खट्टा यार नहीं खट्टा कुछ ना कर सके तो फिर कुछ नहीं कर सकता ना पड़ सकता मैं कह रहा हूँ असली अगर पार्ट टाइम अगर सारी जरूरत पैंदी है ना तो अगर मेन साढ़े स्पिनर अगर कुछ ना कर सकता थोड़ा फायदा उठाना आज पिच है स्पिनर दे आज पता की है आज भी लोग नहीं लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप कमेंट्री भी सुन ली मैंने 2-3 बॉलिंग की मैंने उसमें लिखा है कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टुडे परफॉर्मेंस तुम ना अच्छा करे अभी नहीं हो रहा तुम लोग लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में गेम दैट बोला ना कोई
चक्कर आ रहा है ना है चक्कर आ रहा है सीरियस अंधेरा आ रहा यार बहुत गर्मी है आसमान में अंदर इस साइड पे जाओगे चक्कर आ रहा है आई एम श्योर हमारे बॉलर्स को नहीं लगेगी। किसको वो तो पता चलिए ऐसा है ना तो बैठ के बॉलिंग कर रहा है समझ भाई को शायद ना लगे क्योंकि यंग ब्लड है यू नो 4 बजे भी कर लगे किसी भी गर्मी से 4:30 तो नहीं इसमें वो यंग ब्लड है ना वो समझ भाई Amir Hamza will start the 21st over from the parking end. It's 180 for 6. The current run rate is 9. The score is 227. Rana Amir will be facing Amir Hamza. Now this is a critical phase for ADCL yellows as well as reds. ADCL reds would try to take the score above 220 and ADCL yellows would love to restrict them under 200. Not a convincing shot by Rana, a single taken. CV overnight. Oh, that's definitely a 6. Flat 6. You can't get more flatter than this. Power and accuracy. Waqar Sohail gave his best, but unfortunately the ball was quite full, to be honest. I think Amir Hamza needs to focus the good length area, which is slight weakness for Noman Hamid, rather than bowling him a fuller delivery. Another fuller delivery and a single taken. Sloppy fielding from Amir Hamza. Should have done better than this. Each and every run matters. Sloppy fielding. Sloppy fielding. ये सिंगल होते हैं ना। अब क्या हुआ, बैट्समैन चेंज हो गया, खपा भी आ गया, आपको अपनी बॉलिंग में एडजस्ट करनी पड़ेगी, फील्डर भी एडजस्ट होंगे, फील्डर थकेंगे। 3 deliveries left. And that's a wide delivery. So good over for ADCL Reds. 9 runs coming off it. Yellows would definitely like to have a wicket to at least have some redemption. Very well played, intelligent cricket by Rana Amir. 10 runs already off this over. दस आ गए हैं. वाइड सिंगल छिक्का, सिंगल वाइड सिंगल. Two deliveries still left. That's again a wide delivery. And huge 6, my goodness, huge. Cow corner, one of the biggest sixes of the tournament for sure. Still 1 ball to go. Things not going ADCL Yellow's way. I think it has to do with the fact that in between the Yellows took it for granted. But they need to understand that there are 2 innings. Each and every ball matters. It's a very expensive over so far.
Numan Hamid. And a poor delivery again and on for 4. 21 runs coming off this over. Rana Amir 36 from 20 deliveries. Numan Hamid playing amazing cameo, 38 from 18 deliveries. And Amir Hamza going for 42 runs in 3 overs. Very expensive spell. So the pace theory has faltered for ADCL Yellows. Need to see who will they turn to. Amir comes back. 201 for 6 in 21 overs. Projected score 241. Current run rate 9.65. Musa Raza is sitting with me, slightly disappointed. I feel that he feels that they had ADCL Reds under 180 at least. And the momentum so far is with ADCL Reds. Good batting, of course. So Rana Amir now facing Amir Khan. Still 4 overs to go. If these two batsmen stay there, it would definitely... That's a good delivery. The bowler sliding, falling down. Seems he's okay, but a good delivery. Now this was a good delivery, effort delivery. So far 2.1 overs and 13 runs. So good spell from it should be a catch, should be, and dropped by the captain. Dropped. Abu Bakr Azam Bhatt dropping one. Unlucky. Amir has been unlucky so far. This should have been a catch, have been missed. Slow delivery and it's a catch. And Numan Hamid finishes. मार जाके हेलमेट ले ले मारता है हाँ तुप्पा मारता है वो 4 ओवर मारता है यार उसकी स्पीड भी है यार जा खेल पूरा शाबाश excellent Nomi good batting Nomi Magnificent innings by Numan Hamid comes to end. Superb bowling by Amir. Samad Khan walks in. बकर चलो यार बैक टू फील्ड यार बटा क्या हुआ है बटे क्या हुआ है इतना लकी है कि तुम ठीक है. Samad Khan now facing. 3 deliveries gone. So good over for ADCL Yellow so far.
202 for 21.3. गलत मूव मेरा निकाला। A good single taken at the end. Slight hesitation. Good smack shot by Samad Khan. Magnificent fielding by Rizwan. However, still a single taken. What it does is it brings Rana Amir to face. Gas getting Rana Amir now facing the last two deliveries. Smash towards the cover region. There is protection there. आपको ना देखिए इस तरफ नजर नहीं आएगा, आपकी तरफ नजर आएगा। हाँ, उसकी रीज़न ये है तो आप खड़े, लेकिन वैसे भी जो लाइट है ना उसमें भी नजर आएगी, नजर आएगी। आपको रेड भी नहीं नजर आएगी इस साइड। रेड भी नहीं नजर आएगी। मुझे डीएसएल में कहीं नहीं आती थी। पिंक बॉल मसला नहीं। Actually facing Amir. Smash towards four. My goodness, Samad Khan, you beauty. What a shot. नहीं एक बॉल रहती, एक रन दी। ओवर हो गया नवीन, नीटो ओवर हो गया, सॉरी। 208 जी सर। 6 बजे मैच है दोबारा, मेरा मैसेज कर था 6 बजे। ठीक है, मैच है तो होगा। तो 6 बजे मैच है ना, मुझे पता कितने बजे स्टार्ट होगा। हमारी 6 बजे तक वैसे ही बुकिंग है। वो मैच कर लेते हैं 6 बजे वाला ज़हीरा ले मैच है। सूरज मगरब तो निकल सकता है, पर मैच 6 बजे नहीं स्टार्ट होगा। वैसे भी हमारा 5 बजे वैसे खत्म हो जाएगा। टाइम मेरा 6 बजे तक है। मैं वैसे ही 5 साढ़े 5 खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह दैट इज वन। खाना आउट कर दें। Mustafa now bowling. Rana Amir. Overthrow. Unnecessary and caused a bye. So 1 run taken. Mustafa charging in now. I think some issue with his run-up. Samad Khan with intent and aggression. Man on a mission, sent by the captain. And a single taken by Samad Khan. Back up there, good back up. Now 2 deliveries and 2 runs taken. So far a good over for ADCL Yellows. Rana Amir. थोड़ा जी आगे क्लोज है यदि एक समझ भाई, सॉरी आवर भाई, इस ओवर के बाद पानी आप लेके जाइएगा। इस ओवर के बाद पानी लेके जाइए अभी ओवर के बाद। Not a catch for sure, definitely not a catch. Single call for 2 and a 2 taken. This was definitely not a catch. It was never a catch for sure. Could have been handled slightly better. Could have been restricted for a single. So, power नहीं थी ना। कितने रन आए हैं? 4 आए हैं। 3 bonus. So in 3 deliveries, 4 runs have been taken by ADCL Reds.
Rana Amir facing. No. इधर आउट हो गए आराम से ऐ शाबाश शाबाश बहुत जल्दी है भाग जाएगी बहुत जल्दी है भाग जाएगी तो ये सिंगल तो नहीं था यार किसी सूरत में यार, कम होने यार। ये सिंगल था क्या? अब बोलिए मत बहुत भाग रहा है ये वो आउट था बल्कि। वो अंदर खेलो वहाँ राना आमिर आउट। बहुत प्लेस है बहुत प्लेस उसके साइड से होता है वेल प्लेड है भागी मेरा सर भाईजान ये सिंगल नहीं सर मेरा कॉल किया यार, नहीं यार आपकी कॉल क्या थी? तो आपकी कॉल होती तो रन आउट वो होता। अच्छा हमें आराम से बात की और क्या शिकायत आप ही तो कह रहे हैं ना, उसको चूतिया कह के ग्राउंड में आ रहे हैं आप। इस तरह तो नहीं आप प्लीज सर प्लीज ओके चलो जाओ गाइस शाबाश ठीक है But you contributed very well. Shabash, well done. गेंद तो नहीं रहा है किसी ने मारे। Mahmood is at the non-striker end. He walks in. He's a good batsman. The next batsman will probably be Kamran Butt. Again played and a miss. ठीक जा रहे बदन दे एक गेंद रहेगी। हाँ एक रहेगी। कोई मसला नहीं है अंदर है सही है शाबाश 2 ओवर पड़े इसके बाद 2 ओवर है आराम से शाबाश देखो पहले की कर दे। कोई टेंशन नहीं है ये किसी नोट को पहले देखो पता लगे तो सिंपल डाल होते हो गए थे एंड ऑफ द ओवर। Call for a catch, but definitely not a catch. बहुत साला आपने बहुत साला ठीक है कुछ नहीं कर सकता। तो जीरो भी डालोगे तो ओवर कर देगा। We are again stuck with the point foul conundrum. It's 213 for 8 in 22.5 overs. 23 overs, sorry. So, yellow's perspective, it's a good over. Last 2 overs left. Contemplating who will get the over. Usman Ali. The stand-in captain Rizwan has decided to give over to Usman Ali. फैसल भाई कौन सा टीका लगाया था किसको? और चार्जिंग देखा नहीं ये कौन सा टीका था वो ले ऐसे जो शॉट मारी है इसका ऑर्डर मारा है चौका पर वो भी आमिर। वो भी आमिर को हाँ Usman Ali will bowl the 5th over. Only one bowler is allowed to bowl the 5 overs quota, and the stand-in captain Rizwan has decided to give it to Usman Ali. 213 for 8, 2 overs left. And that's a 6. Valiant effort by Waqar Suhail. Definitely he tried his best. It was always very difficult to hold on to such catches. Would have been a magnificent one. That's what Rana Amir is capable of. Well played. There's protection there. So only a single taken, which brings Mahmood. Bhajan, Rana Amir is on 49. Rana Amir is on 49 from 30 deliveries. Mahmood will face his first delivery. He is a veteran. He knows that he has to take a single and give the strike to Rana Amir. And he's gone.
नहीं मारने दो यार चिक्का भाई आपके स्टॉप नहीं होता चिक्का मारो कमी 9 गेंदा पहिए ने आले 9 deliveries still left. Kamran Butt walks in. Kamran Rashid over. लास्ट विकेट है हाँ जी. It's 220. आप ऐसे करो स्टिकर नीचे लगा दो आपके लिए स्टिकर गलत लगा स्टिकर इधर होना चाहिए Target of 221 would mean an approximate required run rate of 8.9. 250 is unlikely. What Kamran should do here is give strike to the informed batsman Rana Amir, who's on 49. This gives a left-handed perspective as well. Disturbs the bowler. शाबाश 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 12 वाली गेंद ना छेड़ी शाबाश Played in a miss by Kamran Butt. कितनी गेंद रह गई? 2. इसके बाद एक ओवर पूरा है यार. So far, a magnificent over from Usman Ali. This is exactly what the doctor ordered, restricting the score as well as taking wicket. And edged and gone for third man and a 4. I think that's a poor fielding setup for a fast bowler with good pace. Third man should be there. Now these are welcome runs, welcome for ADCL Reds. should he just block the ball मैं तो कहता हूँ block the ball हाँ ठीक है उसको तो ना कहीं बेचारे को छोड़ो 49 किया बाद में 3 बॉल पे इसलिए तो कोई ना खड़ा रहेगा तो वो सिंगल के बंदे 4 इंजन डालेंगे Can it be a 2? The batsman deciding against it. So score क्या है सर? It's 225 for 9 at the end of the 24th over. मैं भी ऐसा था मेरा अपना Score किया 229. 225. 225. शाबाश 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 लड़को और 2 ओवर अच्छे निकल जाएं तो the required run rate will go above 10 immediately लास्ट ओवर है हां लास्ट ओवर तो 225 हो गया हां तो 10 रन कहा जाएगा इंशाल्लाह 6 बॉलें खेलें बस ए लीडो Amir Rana to bowl the last over. A good innings so far by ADCL Reds. This is exactly what definitely they must have intended. Anything above 200, anything near or above 250 is not going to be easy to chase. Kamran And going towards the leg side. इतनी बड़ी लग थी यार आमिर वापस आप बोले Leg का स्टंप उसने leg का गार्ड लिया हुआ है यार. Leg by शाबाश 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 स्लो भी आएगी तेज भी आएगी शाबाश आपने तो दिखाया ये तुम लॉस ये पागल है नहीं मना कर वो तब चलो चे ठीक है सुरेंद्र चौथा बंदा अंदर का मारेगा Rana Amir on 49 runs has played a magnificent innings so far. The real engine behind ADCL Reds reaching this milestone. Actually, 49.
And can it be a catch? No, it won't be. And it's a 50 up. 50 up for Rana Amir. Magnificent innings by Rana Amir. He has scored 50 on 31 deliveries. He has still a role to play in bowling. Smack towards point, going for 4, and it's a 4. Kamran Butt playing an excellent shot. 3 ladies left. Play towards mid wicket. Call for 2, however, I think it's wise to stick to a single. Last 2 deliveries left. 202. Last 2 deliveries. Rana Amir. $232 233 to win. 233 to win. एंड इनिंग्स कर दी उसने नहीं अच्छा वो शुक्र है सही नहीं किया वरना खड्डा पै जाना मैग्निफिसेंट इनिंग्स बाय राना आमिर एक मिनट सनी गिर जाएगा पानी शानी पिए आपने बॉलिंग भी करनी है जूस पिलाऊं तुझे अभी मेरी जरूरत तो नहीं है रेड्स तो नहीं पिलाएगी ठीक ठीक मुझे बता दो रेड्स नहीं पिलाएगी भाई कोई मजाक नहीं नहीं दे रहा नहीं दे रहा बहन चो मांग कर लाता हूँ इतनी मुश्किल से पूरा कर्टन यहाँ हो गया मैं लगता है